Welcome to the Tap the Taboo podcast. As we know that June has set in, and apart from the sizzling summer days, the world around you is celebrating the Pride Month. Today, we have a very special guest with us on the podcast. Maya Sharma, the co-founder of Vikalp Women and LGBTQ support group based in Vadodara. Vikalp support group was founded in 1996 to combat domestic violence and discrimination against women in Gujarat. And Vikalp is a non-profit organization that advocates for the rights of marginalised individuals, such as those from the LGBTQ plus community and women. They work closely with transgender and queer individuals in urban, semi-urban, rural and tribal spaces and sensitize and support people in distress. हम महिलाओं के साथ काम करते रहे, अभी भी महिलाओं के साथ काम करते हैं, मगर वो महिलाओं के साथ काम करते हैं जो अपने आप को स्त्री नहीं समझती हैं। हालांकि वो अपने शरीर से स्त्री हैं, मगर दिल और दिमाग से अपने आप को पुरुष समझती हैं, जिन्हें हम लेस्बियंस कहते हैं, जो स्त्रियां को प्रेम करती हैं उनके साथ। बाइसेक्सुअल्स और एसेक्सुअल्स एक पूरी क्वेयर कम्युनिटी है, उनके साथ हम काम करते हैं। चुनौतियाँ तो बहुत रही हैं और अभी भी हैं, बिकॉज इतना भी रास्ता साफ नहीं हुआ है। हालांकि हमारे हाथ में एक नया कानून आ गया है जिसको ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, 377, जिसको पहले हम जैसे रिश्तों को अपराध समझा जाता था, अब हट गया है। तो बहुत कुछ बदला है और इंटरनेट के आने की वजह से बहुत कुछ बदला है, मगर हम लोगों की चुनौती ये है कि हम लोग बहुत ज़मीन के स्तर पे काम करते हैं, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में। तो उसकी वजह से, क्योंकि शिक्षा इतनी आसानी से नहीं पहुंचती है और इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है, तो द डिफ़िकल्टीज नॉट ओनली ऑफ एक्सेसिबिलिटी but also of really getting to know who you are, because in the larger scheme of things you only have boy and a girl relationship. Now that we have a law which is on our side, we attempt to negotiate with the government and sensitize a whole lot of stakeholders to ensure that there is a proper understanding about queer people. For example, the Transgender Act facilitates the issuance of a transgender card, which further enables the transgender people to access government welfare schemes. How would you describe the transition in the culture of self-acceptance and parental acceptance in the society over the years, now that you have been working in this space for a good amount of time, where the changes have been laid and where more work is yet to be done? माँ बाप की अगर बात करें तो अभी भी ऐसा है कि माँ बाप बहुत बार स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे की ज़िंदगी अलग चलती है और जब वो अपने घर जाता है तो वो एक अलग तरह से जीता है, क्योंकि माँ बाप ने एक तरीका, और बहुत अरमान होते हैं हर बच्चे के लिए। तो बच्चे भी कोशिश करते हैं कि अपने माँ बाप के जो इच्छाएं हैं उनके मुताबिक वो जी पाए, पर उसमें बहुत तकलीफ होती है। तो बहुत मुश्किल है कहना कि अब ये बदल गया है, क्योंकि अगर हम इंटरनेट पे देखेंगे तो लगेगा ज़माना सचमुच बदल गया। इतना कुछ अवेलेबल है, शिक्षा है, इतने सारे शब्द हो गए। जो पहले हमारे पास भाषा नहीं होती थी, अब भाषा आ गई। दुनिया के आसपास क्या हो रहा है, फिल्में हैं, गाने हैं, बहुत कुछ है। उसके बावजूद हम जब असली ज़िंदगी जीते हैं, हमारी दिनचर्या दिन पे दिन जो हमारा गुजारा होता है, वहाँ पे हम बहुत आसानी से नहीं कह सकते कि मैं क्वेयर हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं काम की जगह पे हूँ और अगर मैंने अपना सेक्स चेंज कर लिया है और मैं टॉयलेट जा रही हूँ, तो ट्रांसमैस्कुलाइन पर्सन को दिक्कत होगी कहीं टॉयलेट जाने की, कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ, कहीं मेरे को नौकरी से नहीं निकाल दिया जाए। Well, there are several such stories actually, where in
And in a lot of cases, actually, the parents themselves have approached us, sort of telling us that this is their child and how should they go about it. You know, when children express love for the other sex, for the same sex, that is a little difficult because unfortunately even the law is not on the side, and as parents, you know, you want your child to be legally entitled, and that's a difficult issue. Well, I think Bollywood has done a bit of a service, no matter good or bad. Karan Johar initially used to show them, you know, as a very laughable character, and that hurt, but at least there was some visibility, you know. So I think, and this Badai was a fairly reasonable film, you know, one cannot expect more. But Fire was also a good film actually. It began off really well, and actually it's a film need not be queer, but it can nonetheless be queer in the sense of it being non-normative. And there are good regional films that show queer relationships. So, and there are good documentaries also produced by queer people that are good. But unfortunately, they don't make it to the mainstream, so we don't get to hear of them. So I think the idea of gender is not is to de-link it with body. Being said that you have worked with urban, semi-urban and rural spaces in the queer community, how do you see the difference? Like, what is the difference between both? The issue of self-acceptance still is because of the huge disparity between rural and urban areas, and perhaps even in the way people are conditioned. You may not necessarily be in a rural area to come to terms. You know, you may still be in a city and having a hard time accepting yourself because the journey is a little different for lesbian women. For example, for me, it was hard for me to really express my sexual preference because I really had no choice at that given point of time. I thought marriage is the end all and be all, and of course producing a son. Being a woman, you have to have a child. So I had to marry, but I was nonetheless very uncomfortable about marriage, but I really had no choice. But now I think a lot of women have choices even in terms of deciding the man they marry and the woman that they wish to live. So I think in that sense, there's a huge amount of change vis-a-vis women, yeah, and the articulation of their sexual expression. If you could throw light on the stigmas and stereotypes that are still existing, given that we are in a society which is in the 21st century, स्टिग्मा बहुत तरह के हैं. अगर मैं कहूँ, अगर थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए अगर मैं सोचूं तो एक तो खुद के अंदर होता है, वो सबसे रुकावट पैदा करता है सबसे ज़्यादा. फिर कानूनी तौर पे जिस तरह से हमारे कानून हैं, फिर हमारे सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक ढांचे जो बने हुए हैं, जहाँ मतलब शादी लगभग हम कहेंगे कि ज़बरदस्ती है, और शादी भी जाति की प्रथा पे है, और शादी के और जो अपनी यौन इच्छा है वो शादी के दायरे में ही व्यक्त करना है, तो उससे बहुत सारी और दिक्कतें पैदा होती हैं. तो अगर हम एक चुप्पी की बात करें तो यौनिकता को लेके पूरे समाज में एक चुप्पी है. तो अगर उस चुप्पी के अंतर्गत अगर हम सेम सेक्स लव की बात करें तो वो तो एक बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है. तो इस वजह से एक स्टिग्मा क्या बनता है, आप सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जब आपको एक झूठ को सच बनाना है कि एक ही प्रकार का जीवन है स्त्री और पुरुष का, तो आप जो अन्य शैली है जीवन की
उसको आप एकदम इरेज कर देंगे या उसको ढांक देंगे, तो क्योंकि वो दिख नहीं रहा है और क्योंकि वो अबनॉर्मल है तो वही आपको सही लगेगा। और उसको गलत करने में क्या समझते हैं, ये कुदरती नहीं है। और जब आप कुदरती कहते हैं तो मेरा ये सवाल है कि क्या कुदरत है? क्या हमारे कपड़े कुदरत है? क्या हमारा खाना कुदरती है? कुछ भी तो कुदरत नहीं है। तो इस तरह से अननेचुरल कहें कि उसको हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक स्टिग्मा है कि अगर मैं लेस्बियन हूँ और अगर मेरे रिश्तेदारों को मालूम लगेगा तो वो सोचेंगे कि अरे मेरा बच्चा भी बिगड़ जाएगा। वो कंटेजियस बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त है। और हालांकि बदल रहा है, फिर भी आज भी हमारी साइंस की किताबों में होमोसेक्सुअलिटी को डिजीज़ की तरह देखा है। अभी भी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिजीज़ की तरह देखा है। तो आप ये समझिए कि इसको होमोसेक्सुअलिटी को एक डिजीज़ की तरह देखा जाता है। अननेचुरल कहते हैं, कंटेजियस कहते हैं, और जादू टोना भी कहते हैं। गांव में कहते हैं अरे इसने ऐसा जादू कर दिया कि वो तो उसको छोड़ता ही नहीं है या छोड़ती ही नहीं है। तो जादू टोना के नज़रिए से भी देखते हैं। And how important is it to normalize accepting yourself the way you are, and do you see a world where coming out is not a concept? नहीं, मुझे मैं ये कहना नहीं चाहती, पर ये कमिंग आउट का आइडिया है ना, बहुत पश्चिमी भी है। क्योंकि कमिंग आउट, मैं कम आउट आज यहाँ हो गई, पर शायद ऐसा मौका आएगा कि मैं शायद दोबारा इस दरवाजे के बाहर शायद मैं कम आउट नहीं कर पाऊँ। तो कमिंग आउट भी एक स्ट्रैटेजी होता है, तरीका होता है जीने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार मैं कम आउट हो गई तो मैं कम आउट ही हो गई। Given that in the recent times we emphasize a lot on the importance of educating right from the beginning to create a society which sees every individual as equal, how do you emphasize the change that is needed in the current education system that is needed? I don't think there's any queer story in the school books. I've read through earlier, the Gujarat board books. I didn't find any queer stories, though there is one very interesting story about a woman who actually fights the bull. No man in the village does that. It's very interesting, and she tells her father that, she challenges her father and the village. So that is something very interesting, and perhaps questions can be more exploratory in terms of asking, questioning notions of masculinity, for example. So, matlab, challenging those notions will ultimately lead you to understand that body is no definition for a man and a woman. Rather, it's what your mind and what your choice is. So, I think questioning the notion of binary, or questioning the biological body as being you, perhaps will bring us to a better understanding overall, not only for queer people, but it broadens horizons for everyone. 5% जो study अभी आया है, उसमें generation Z is the highest among all the generations till date, who have the confidence to come out in the online space and find community and belongingness. So what do you have to say about that? My question is often, are you sure that those people who are coming out on social media is also out in public, in person to their family? So that, in fact, is this creating a greater divide? Is this creating more unsafety for people because there's lack of acceptance? So I don't know how far. I think internet has played a very critical role in opening spaces for people. But the 75%, how much can it lead to change? Perhaps it will in the time to come. But we are not sure if these people who are out in social media are out to the public in their everyday life. How safe they feel in telling their parents, for example.